गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास पे हम लोगों ने ओलिगोपोली के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया था और लगता है तो हम लोग बात कर रहे थे ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट की कि आखिर ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट होता क्या है। जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा था 2 मिनट लगेगा, जल्दी से आप पहले उसको पढ़िए और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं सबको। हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन फिर भी क्योंकि किंग डिमांड कर मुझे पढ़ाना है इसलिए मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा। विदाउट मेकिंग नॉइज सेटल डाउन और जल्दी जल्दी इसको पढ़ के कंप्लीट करो। Have you gone through? देखिए, अगर हम लोग ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करें तो ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट realistic form of market when you classify the markets on the basis of competition. On the basis of competition. Oligopoly is a type of market which is actually imperfect in nature. It is imperfect in nature. It is a type of imperfect competition. Now, what is oligopoly? How would you define the oligopoly form of market? Oligopoly form of market is said to be a market wherein you find competition among few sellers. Competition among few sellers. Few means countable number of sellers. Countable means the number of sellers
will be anywhere between 2 and 10. Anywhere between 2 and 10. If the number of sellers in the market is less than 2, it will be monopoly. And if the number of sellers exceed 10, then the oligopoly form of market will automatically get converted into monopolistic form of market. Which form of market? Monopolistic form of market. Now, moving further. This form of market provides the consumers or the customers with a wide variety of goods to choose from. It provides the consumers or the customers with wide variety of products to choose from. Why? Because in oligopoly, you have both homogeneous product as well as heterogeneous product, isn't it? Products are substitutes, maybe perfect substitute, or maybe substitutes, but they are differentiated in nature. They are differentiated in nature. Whatever the case may be the product the homogeneous or be it heterogeneous, it provides the consumers or the customers with a large base to choose from. Therefore, all the oligopoly firms are in fierce competition. Are in fierce competition. Now, the two very interesting feature of oligopoly form of market that you should remember, and if the questions in examination asks you to write a short note on oligopoly, so these 2 points will need some special mention. Now, what are those points? One is group behavior and the other one is interdependence. One feature is group behavior and the other one is interdependence. Now, what is group behavior? Because the number of firms operating in this form of market is anywhere between 2 and 10, they can behave like a group. They can behave like a small group, right? Now, how would a group behave? How would a group behave? Group can behave in any of the following 3 ways. A group can behave in any of the following 3 ways. Number 1, all the oligopoly firms, be it 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever, all the oligopoly firms will sit together, formulate a common plan and policy to be accepted by each one of them, and they will operate without any competition. They will operate without competition, isn't it? All the firms will come together, they will sit, formulate a common plan and policy to be accepted by each one of them, and they will operate on that common plan and policy, which implies that no oligopoly firm will be competing with each other, because each one of them have a common plan. Point number B, how they could behave like a group, is that the firms come together, identify their market leader or the dominant firm which has the highest market share, referred to as a dominant firm. All the other firms will follow the policy framed by or formulated by the dominant firm, right? That dominant firm will act as a leader, and all other oligopoly firms will follow that leader, right? Now, point number 3, how oligopoly firm can behave. Even though their number is limited, 2 to 10, they will behave on individual basis. All the firms will have their own plans and policy. Nobody will be following the leader. Nobody will be following a common plan, but they will be following or having their own plan, individual plan and policy and strategy, right? And this implies that each one of the oligopoly firm is there to compete with each other, because
They are not following a common plan. They are not following the plan of the leader. Rather, they are following a common individual plan, right? There cannot be competition. Market leader. How can there be a competition? Now, the next important feature of oligopoly is that interdependence. Interdependence. Interdependence means the plan and the strategy of one firm depends upon the plan and the strategy of another. Even though I'm free to formulate my own strategy and plan, I will think about what others are formulating, what others are strategizing. I can't ignore them. I can't ignore them. Any change in their specific policies will force me to change my policy. This simply means that I'm interdependent, or my policies are interdependent on the policies of other oligopoly firms. Right? Now, moving on to some other features. In this form of market, what you observe that firms are engaged in excessive spending on advertisement, sales, promotion, and all. Why? Because products are differentiated. Products are differentiated. Firms need to make their products known to the customers. Not only the existing customers, but also the projected customers. Right? Customers don't have the knowledge about products. Even though the products are substitute for each other, the truth of the matter is that you need to make your customers aware about how your product is superior to others. What is the uniqueness that your product possesses in respect to some other products? Isn't it? So these are some of the reasons why in oligopoly form of market, huge spending is required on advertisement and sales promotion. As you might have studied, that oligopoly form of market is so real, that no principles related to cost, revenue, pricing, these principles fail. These principles fail. In real world, these principles do not apply. You don't get the opportunity or the time to make adjustments to these principles or in accordance to these principles. Isn't it? So, how to explain oligopoly form of market? What will best explain the oligopoly form of market? How to get a better understanding as to what oligopoly form of market is? So here comes a kink demand curve. Which demand curve? Kink demand curve. K-I-N-K. Kink demand curve. We are talking about which curve? Kink demand curve. Right? Now, what is this kink demand curve? And prior to understanding this kink demand curve, we shall know as to who gave this kink demand curve. It was Professor Sweezy, SWEEZY. स्वीजी ने किंग डिमांड कर्व के कॉन्सेप्ट को दिया. किसने दिया? स्वीजी ने किंग डिमांड कर्व के कॉन्सेप्ट को दिया. कहा यह जाता है कि किंग डिमांड कर्व जो है वो ओलिगोपोली फॉर्म को बेस्ट डिफाइन करता है, बेस्ट एक्सप्लेन करता है. इससे बढ़िया कोई और एक्सप्लेनेशन ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट का हो नहीं सकता. राइट? अब आइए हम लोग किंग डिमांड कर्व को देखते हैं. ये होता क्या है, इसका नेचर क्या है
और ये कैसे ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट को एक्सप्लेन करता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक्स एक्सिस ड्रॉ करना बाद में, पहले बोर्ड पे समझ लो। वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस को लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? क्वांटिटी। ये देखिए किंग डिमांड कर्व, दिस इज अ किंग डिमांड, दिस इज अ किंग डिमांड कर्व। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस डिमांड कर्व में एक बेंड आपको मिलेगा। डू यू फाइंड अ बेंड? यस, दिस इज द बेंड, दिस इज अ बेंड, and this bend is referred to as kink. This bend is referred to as kink. इस bend को हम लोग क्या रेफर करते हैं? kink रेफर करते हैं। सुनना ध्यान से। अगर आप बोर्ड पे ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बेंड है, इस बेंड की वजह से ये डिमांड कर्व दो हिस्सों में बटा है क्या? एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, राइट? तो किंक क्या हुआ? किंक इज अ बेंड, किंक इज अ बेंड which divides the demand curve of an oligopoly firm into two halves, into two halves. क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक ऊपर का हिस्सा और दूसरा नीचे का हिस्सा जो हम लोगों को समझना है। ये ऊपर वाला हिस्सा आपको थोड़ा फ्लैट लग रहा होगा, फ्लैट लग रहा है क्या? तो जब आप कह रहे हैं कि ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट लग रहा है, इसका मतलब ये इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईडी ग्रेटर देन 1। यस और नो क्लास? ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा स्टीपर डिमांड कर्व को, ये जो स्लोप है वो स्टीप है, है ना? तो जब ये स्टीप स्लोप है, इसका मतलब ईडी इज लेस देन 1। Am I clear? What it implies? It implies that when you are saying ED is greater than 1, इसका मतलब demand is elastic. Demand is what? और यहां पे जब आप कह रहे हैं ED less than 1, तो demand is what? Inelastic. Am I clear? बोर्ड पे बना रहेगा, बना लेना, बनाने की हड़बड़ी मत करो, समझ लो। पहले समझ लोगे तो खुद से बना लोगे, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? किंग डिमांड कर्व दिया किसने? बगैर बोर्ड पे देखे हुए। किंग डिमांड कर्व। अब ये जो किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट प्रोफेसर स्वीजी ने दिया, ये किंग का मतलब क्या? किंग का मतलब बेंड। और ये बेंड का काम क्या है? ओलिगोपोली फर्म के डिमांड कर्व को दो हिस्सों में बांट दो। क्लियर है? ऊपर का जो हिस्सा है वो फ्लैट है या स्टीप है? और नीचे का हिस्सा फ्लैट है, इसका मतलब डिमांड क्या हो गया? ईडी ग्रेटर देन। और नीचे का हिस्सा इनइलास्टिक, ईडी लेस देन। क्लियर है? अब इस डिमांड कर्व को बाबू हम लोग जो पॉइंट हमने पढ़ा था इंटरडिपेंडेंस वाले फीचर को, हम लोग देखिए कितने बखूबी यहां पे एक्सप्लेन किया गया है इस कर्व से इंटरडिपेंडेंस को। सुनना एकदम आसानी से समझ में आएगा। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया? कि आप अपने लिए खुद की पॉलिसी बनाने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी वो पॉलिसी प्रभावित होगी आपके कॉम्पीटिंग फर्म्स की पॉलिसी से, हाँ या ना? इंटरडिपेंडेंस यही हुआ। आइए अब हम लोग समझते हैं। ये जो बेंड है, इस बेंड को हमने वाई एक्सिस पे मिलाया और ये जहां पे मिला वो हमने प्राइस दे दी पी। तो अभी मौजूदा प्राइस क्या है? मौजूदा प्राइस है पी, ओपी। ओपी मान लीजिए, मौजूदा प्राइस क्या है? ओपी।
राइट। अब देखिए, सब कुछ प्राइस से हम लोग एक्सप्लेन करें, क्योंकि प्राइसिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट मिक्स इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, प्रमोशन इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, प्राइसिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। अब क्या हुआ, किसी एक फर्म ने, सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, और लॉजिकल होके आंसर करना। किसी एक फर्म ने क्या किया, जो मौजूदा प्राइस है पी या ओपी जो भी कह लीजिए, उससे प्राइस को उसने बढ़ा दिया। प्राइस को क्या किया उसने, बढ़ा। प्राइस बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया, मेरे ख्याल से इट हैज स्टार्टेड कूलिंग नाउ, है ना। लेट्स क्लोज दिस। तो अब प्राइस बढ़ गया, ध्यान से सुनना और जवाब देना। प्राइस बढ़ गया, किसी एक फर्म ने प्राइस को क्या किया, बढ़ा दिया। सबने नहीं बढ़ाया, किसी एक फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं, क्या वो उस बढ़े हुए प्राइस वाले फर्म के पास जाएंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए? नहीं जाएंगे। ये जो ओलिगोपोली फर्म था, आप कहेंगे कि सर इसने प्राइस क्यों बढ़ाया? ये तो अद्भुत बात हो गई कि कोई फर्म प्राइस बढ़ा देता है। ये प्राइस इसलिए बढ़ा रहा है, इसको लग रहा है कि भाई हम जो प्राइस बढ़ाएंगे थोड़ा कम ही बेचेंगे, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा नहीं। इसकी सोच ये थी। क्लियर है? तो इसने ये सोच रखते हुए प्राइस को बढ़ाया। प्राइस को क्या किया इसने, बढ़ा दिया। लेकिन कस्टमर्स तो जागरूक है, कस्टमर सारी चीजों को जानता है, और यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, होमोजिनिटी भी है और हेट्रोजिनिटी भी है। तो कंज्यूमर सोचेगा कि ठीक है, जिसने प्राइस बढ़ाया उसको बढ़ाने देते, मेरे पास विकल्प बाकी भी तो फर्म है, हम उसके पास चले जाएंगे। है ना? तो ये जो ओलिगोपोली फर्म है, जिसने ये सोचा कि भाई हम प्राइस बढ़ा देंगे और हम माल बेचेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा कि जिस प्रोपोर्शन में उसने प्राइस बढ़ाया, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में उसका डिमांड घट गया। समझ बात? मतलब इसका यह मतलब हुआ कि वो जिस प्रोपोर्शन में प्राइस, इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। यही मतलब हुआ ना। इसने सोचा कि मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो ठीक है, डिमांड घटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत घटेगा। लेकिन हुआ क्या, इसने प्राइस बढ़ाया, और जिस प्रोपोर्शन में इसने प्राइस बढ़ाया, उससे कहीं ज्यादा प्रोपोर्शन से डिमांड घट गया। क्लियर है? तो क्या इसके पास प्राइस बढ़ाने का कोई फायदा हुआ? प्राइस बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाकी फर्म ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। बाकी फर्म ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। ये तो अब क्या है, किसी एक फर्म ने प्राइस को घटाया। सुनना ध्यान से, कोई एक फर्म ज्यादा तेज बनते हुए क्या कर रहा है, प्राइस को घटा रहा है। ये सोच रहा है कि सारा ग्राहक मेरे पास आ जाए, सारा ग्राहक मेरे पास आएगा, सबका सुपड़ा साफ कर देगा, ये प्राइस घटा। लेकिन इंटरडिपेंडेंस क्या है? जैसे ही एक फर्म ने प्राइस घटाया, तो बाकी सारे फर्म को उस फर्म से खतरा हो गया। खतरा हो गया ना। तो बाकियों ने भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को क्या किया, चेंज कर दिया। बाकियों ने भी अपने प्राइस को कम कर दिया। इंटरडिपेंडेंस हो गया ना। अब क्या हुआ, सबका प्राइस सेम हो गया। तो कस्टमर, जो आपने ये सोचा था कि प्राइस घटाने से मेरे पास ज्यादा कस्टमर आएगा, क्या आया? ठीक है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का इधर उधर हुआ, वो भी टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात? तो जिस प्रोपोर्शन में प्राइस, इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया, जिस प्रोपोर्शन में प्राइस घटा, उससे कम प्रोपोर्शन में डिमांड में
बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज हुआ। तो न तो प्राइस बढ़ाने से कोई फायदा है, न प्राइस घटाने से। क्यों? इंटरडिपेंडेंस। तो ये जो प्राइस यहाँ पे क्या रह गया? न तो प्राइस इतनी आसानी से बढ़ सकता है, न प्राइस इतनी आसानी से घट सकता है। इसलिए ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस रिजिडिटी। क्या कहते हैं? प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या हो गया? कठोरता, इनफ्लेक्सिबिलिटी, जहां पे आप इतनी आसानी से चेंजेस नहीं कर सकते। गेटिंग द पॉइंट? ना तो प्राइस आप इतनी आसानी से बढ़ा सकते क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा, बढ़ा लीजिए। अगर आप प्राइस घटाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है, बाकी सारे फर्म भी आपको देखा देखी प्राइस, तो घर से नुकसान हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? या तो सब कोई मिलके बढ़ाए और नहीं तो सब कोई मिलके घटाए। जैसे आप देखिए सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट, सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट देखिए, प्राइसिंग जो होता है सभी फर्म एक साथ बढ़ाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा इस चीज को, है ना? या आप देखिए सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट में भी जब प्राइसिंग बढ़ता है तो क्या होता है? एक साथ एक का देखा देखी सब कोई प्राइस बढ़ा देता है, राइट? तो ये सिंबॉलिक है किस चीज का? ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट। तो प्राइस रिजिडिटी मतलब मूल्य में कठोरता, इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं, कोई लाभ नहीं, प्राइस बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है और प्राइस घटाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है। सब आपका देखा देखी चेंज कर लेगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में चेंजेस आ जाएगा। क्लियर है? किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो जल्दी से हमको लिख के दिखाई दो। राइट ए शॉर्ट क्वेश्चन ही है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किंग डिमांड कर्व। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किंग डिमांड कर्व। हाँ, पहले ड्रॉ कर लो। और ये थोड़ा सा ना, ये स्टीप है, समझ रहे शायद। ये स्ट्रेट नहीं है, वो स्टीप है। हाँ, सटा हुआ है, सटा हुआ है। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट। तो इसका भी आंसर यही होगा, समझ रहे हैं? हाँ, जल्दी लिख के दिखाओ, 5 से 7 मिनट का समय है खाली, फिर अटेंडेंस लेना है हमको। और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अलग पैराग्राफ में लिखिएगा जहां पे डिमांड इलास्टिक है, और नीचे वाला हिस्सा नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हुए रीजन क्यों है, क्या है, और प्राइस, आखिरी में कंक्लूजन में प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करना।
गेट बंद करो, गेट बंद करो। हेलो, गेट बंद करो। क्लास चल रहा बगल में ना। ठीक है क्लास, कीप ऑन राइटिंग। आई एम स्टॉपिंग द लाइव स्ट्रीमिंग नाउ।